How are you all? Hope you are all fine. Friends, if you have any difficulty regarding question and answers, you may WhatsApp me particular answer या फिर whole lesson, whatever it is. But friends, make it a point to write the question answer on your own. Try this because you are all now in 7th standard. In case if you find any word not means not covered in the video, yeah, something like that, you can post me, you can ask me. Friends, don't get afraid. I'll be telling you if it is in video, otherwise I'll be sending you the answers. You can directly call me, you can WhatsApp me, whatever whichever is comfortable for you, you can do that. Okay, today we are dealing with the most important lesson, spelling rules. Lesson number 31, page number 129. Spelling rules is very important for English language, friends. So I think so everybody will listen to this video very properly. So English is not an easy language to spell. There are 26 letters in the English alphabets as against about 45 basic sounds, and the letters often don't match the sound. It is a tricky language, so to say. English is a tricky language. एक आपको फोर्थ में पोएम भी थी शायद ट्रिकी लैंग्वेज के बारे में, तो आई डोंट नो वेदर यू हैड आर नॉट, बिकॉज इन स्टेट बोर्ड इट इज़ देयर. You all have studied CBSE, so okay, never mind. But if you find any state board friends and 4th standard, you can see that poem is there regarding tricky language. Because below are some spelling rules. You will be able to avoid many spelling mistakes if you observe these rules. Means if you observe, understand and follow the rules. Final E. When something, example, ed, ing, est. See, I am repeating this. When something like ed, ing, est is added to a word ending in silent e, hope. होप म्हणजे ई का प्रोनाउंसिएशन नहीं आया है ना. होप, होप्ड. Hope, hoped means E is considered as silent and ED is added. Write, writing. E is removed. Before, normally dropped before a vowel. जैसे कि TE है तो ING आ जाता है, तो I is vowel and E is also vowel for hope, hoped. So before the vowel E is dropped and I is added along with consonant. Understand? Move, movable. A is vowel. You know vowels are A, E, I, O, U. 5 vowels are there in English language. I think you know that. We have discussed that many times. But even those who have not paid the attention, for them I am telling that there are 5 vowels in English language. They are A, E, I, O, U are vowels and remaining 21 are consonants. जैसे कि हिंदी में रहते हैं स्वर और व्यंजन. समझ में आया? अ से आहा तक स्वर रहते हैं, क से ज्ञ तक व्यंजन रहते हैं. तो वैसे ही कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स है इंग्लिश लैंग्वेज में. तो वोवेल्स आर ओनली 5, very easy to remember, and that you have been learning since your lower standards. So no need to tell much about that. And we have also discussed vowels many times in your 5th standard, 6th standard. So let's hope that you are able to understand. When something, example, ed, ing, est is added in a word ending in silent e, the e is normally dropped before a vowel. This you understood? Wise, wisest. So e is double e will not come, one e will be dropped. EST का E लगाएंगे और वाइस का E निकाल देंगे. Final E is not normally dropped before a consonant. When consonant will come,
the final E is not dropped. Hope, hopeful. So E is not dropped. Move, movement. Because F, M, L, N all are consonants. So what you have to remember, whenever you are adding the word ending with E and you are adding the word starting with consonant, E is not removed. And when you are adding ed, ing, er, est, that is word beginning with consonant, then E is dropped before the vowel. E is not dropped before the consonant. These are the two rules, friends, you might have understood. Exceptions are there. Exceptions are there only in few. जैसे true, truly, due, duly, whole, wholly, have, full, nine, ninth, wise, wisdom, argue, argument. In these words, in spite of consonant, E is dropped. So these are exceptions. हर इसमें exceptions रहते हैं. जैसे an कभी कभी ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, एच से भी अगर स्टार्ट है लेकिन एच साइलेंट है तभी भी एन लगेगा. अपन एन के लिए क्या करते हैं, ओवेल से जो स्टार्ट होता है उसको एन लगाते हैं, है ना, आर्टिकल. बट देर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो दैट वेन एवर यू हैव, फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट मैन, वाई डू यू add an to the honest? Because it is starting with H, so no need to add. But as H is silent, we pronounce it as honest. The O is pronounced, so O is vowel, and so these exceptions should be accepted. Okay, friends, followed. In the following word, the final E is retained to keep CRG soft before ARO. Notice, noticeable. In spite of having vowel, E is kept because E is retained to keep CRG before ARO. जैसे कि नोटिस तो नोटिसेबल, ई के बाद ए लग रहा है और ई के पहले सी है, तो CRG. चेंज, चेंजेबल. पीस, peaceable. Courage, courageous. These are the few examples. Sometimes you have to follow this only to improve your spelling, friends. Spelling is very important part in English language. You may not be feeling now its importance, but as we are telling you, you should consider that as important, friends. Spellings are always important in language, that you should remember every time, and whenever you find time, these rules you should mug it up. Because rules क्या है, अभी वीडियो में देखोगे तो अच्छे से आ रहेंगे, में आप भूल जाते हो, तो you have to read the rules as and when you get the time. So now final Y, page number 130, friends, open page number 130. So final Y, you can see that in words ending in a consonant plus Y, the Y changes to EI before S and I before ED, EST and LY. So how we can, if we see the example, for example, lady plus S if you want to add, तो ladies का क्या होगा, स्पेलिंग कैसे होगा, Y को हटाना है, IE लगाना है और फिर S लगाना है. If you want to make it plural for the words ending in Y, so Y will change and I will be replaced, and then S, yeah, whatever it is will be added. Try, tried, Y हटाया, IE और D लगा दिया. Try, trial, AL. Marry, marries. Marry, married. Marry, marriage. सी ED लगाना है तो भी Y हटा, IED लगा. AGE लगाना है तो भी Y हटा, IAGE लगा. अंडरस्टैंड. ED लगाना है तो भी Y हटा, IED लगा. फनी, फनियर. ER लगाना है तो भी Y हटा, IER लगा. सिली, सिलीएस्ट.
हैप्पी हैप्पीली. ओके. सो इन सभी चीज़ों में इन द वर्ड्स एंडिंग इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई, वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है, जैसे लेडी में वाई के पहले डी है, ट्राई में वाई के पहले आर है, मैरी में वाई के पहले आर है, फनी में वाई के पहले एन है, सिली में वाई के पहले एल है, हैप्पी में वाई के पहले पी है. So I hope now you all know what consonants are. So in the words ending in a consonant plus y, the y changes to IE before S. Okay, and I before ED and EST. The y does not change if it comes after a vowel letter. See now the difference. First we told y will change whenever it comes before the consonant, before the consonant, है ना. Now y does not change if it comes after a vowel letter. Play, plays. Y is coming before a, so no change, only adding s. Play, plays. Play, played. Play, playing. Play, player. Okay. So this is the one more rule you have to keep it in mind. Whenever it is ending in consonant, y will change to IE before S. I before ED, EST, LY. And y does not change if it comes after the vowel letter. Exceptions are there, dear ones. जैसे कि पे तो y क्या है, ओबल के बाद में y है, लेकिन y हटा I और D लगा. ED क्या होता, ED में E निकल जाएगा और I और D लगेगा. पे, पेड, से, सेड, ले, लेट, डे, डेली, गे, गेली. The y does not change before ing. Try, trying. Marry, marrying. Means y will remain like that in before ing. If you want to change the word to ing, that is verb. ज़्यादातर दोस्तों verb ing लगा तो वो verb होता है. Final IE changes to y before ing. Lie, lying. Die, dying. So final IE changes to y before ing. I hope you are following. It's not going beyond what to say. सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा ना दोस्तों, आपको समझ में आ रहा बेटो. ओके. If you any video, if you want to continue or you like, you never send me that ma'am this video was nice, we understood, like that you never give response. So I'm just not following which type of videos to send. Is it too much for you? Is it okay for you? Are you enjoying the videos? Are you enjoying the grammar? You people never give me any response. So that if you कोऑपरेट एंड गिव मी रेस्पॉन्स कि मैम इस टाइप के वीडियोस हमको बहुत अच्छे लगते हैं और इसको और एलाबरेट करिए, या फिर इतने ही ठीक है. नथिंग कम्स फ्रॉम यू. मुझे तो ऐसा लगता है कि आप वीडियो भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं पता नहीं. वी आर सेंडिंग एंड योर पेरेंट्स आर स्पेयरिंग टाइम. मे बी दे मे बी सिटिंग विथ यू आर नॉट, आई डोंट नो. डोंट वरी, इफ दे डोंट सिट, यू अलोन वॉच द वीडियो and you will find it easy. After watching the video आपको लगेगा कि हाँ सच में इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ कुछ रूल्स है जो अपने को बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, तभी अपन इंग्लिश में स्पेलिंग्स में बेस्ट हो सकते हैं. नाउ इट इज़ फाइनल कॉन्सोनेंट. In short words ending in one vowel letter plus one consonant letter, the consonant is doubled before ending with a vowel. In short words ending with one vowel letter, जैसे कि बेग में ई कॉन्सोनेंट है, सॉरी ई ओवल है और जी कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे में वन ओवल वन कॉन्सोनेंट शॉर्ट वर्ड में क्या होगा, कॉन्सोनेंट विल बी डबल्ड विथ ओवल. जैसे बेग, बेग्ड, हाँ, स्टॉप, स्टॉप्ड. तो डबल पी बहुत सारे लोग लगाते नहीं हो, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि डबल लेटर कब होता है.
डबल लेटर कब होता है? वन ओवल लेटर प्लस वन कॉन्सोनेंट लेटर रहता है, तब आखिरी का जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा और ईडी लग जाएगा. बेग बेग्ड, स्टॉप स्टॉप्ड, स्टॉप स्टॉपिंग में भी लगता है. प्लान प्लानिंग, फैट फैटर, बिग बिगर, बिगेस्ट. बिग बिगर भी होता है, बिग बिगेस्ट भी होता है. ओके, क्लीन क्लीन्ड, बट वीक वीकर. टू ओवेल्स, जैसे क्लीन में दो ओवेल आ गए, ई और ए उसके बाद कॉन्सोनेंट है तो लेटर डबल नहीं होगा, कॉन्सोनेंट विल नॉट बी डबल्ड. क्लीन क्लीन्ड हो जाएगा, वीक वीकर हो जाएगा, आस्क आस्क्ड हो जाएगा, फास्ट फास्टर हो जाएगा. whenever two vowels and two consonants are there, that letter is not repeated. दोस्तों, this rule you have to bear in mind, my dear friends. In longer words, the final syllable is doubled if the last part of the word is stressed. वर्ड अगर बड़ा है और फाइनल सिलेबल, सिलेबल क्या होता है? ओवेल का साउंड, ओवेल का साउंड डबल हो जाएगा. जैसे बिगिन, आयन है ना, ओवेल का साउंड आयन है. बिगिनिंग, जैसे आई एन एन आई एन जी, एन रिपीट होगा, वापस से आई एन जी आ जाएगा. तो ये लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्ट्रेस्ड. बिगिन, बिगिनिंग. रेफर, रेफर्ड. एडमिट, एडमिटेड. समझ में आया? द कॉन्सोनेंट इज नॉट डबल्ड इफ द लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड इज अनस्ट्रेस्ड. विजिट, उसमें अनस्ट्रेस्ड है तो विजिटिंग. सफर, सफर्ड. ओपन, ओपनड. बट L is doubled in British English even if the last part of the vowel is unstressed. अनस्ट्रेस्ड है लास्ट पार्ट ऑफ द ओवेल, लेकिन एल जो है वो डबल हो जाएगा. जैसे ट्रैवल, ट्रैवल्ड, ट्रैवल, ट्रैवलर, क्वारल, क्वारलिंग. ई आई आर आई, ई आर ई आई. When I-E-R-E-I is pronounced like a E in the word be, I comes before E except after C. Remember this jingle. Write I before E except after C or when sounded like a A, as in ATN way. समझ में आया दोस्तों? I-E-R-E-I is pronounced like double E, B. I comes before E except after C. I-E, thief. I-E after C, receive. So, E-I. E-I. E-I when sounded like letter A. Way, way. 80, neighbor, neighbor, vain. So, there are some exceptions like C's, leisure, protein, foreign. So now दोस्तों, there is a homework for you, page number 132. Please do this homework. Which spelling is correct? Which spelling is correct? You have to do this for yourself. Okay. Please read again from the textbook, page number 130, 131, 129 like that, and complete this lesson and homework also. So homework I have given on my part, you have to complete after seeing the video. I don't know how many of you will be doing, but those who will be doing, it is for their good, not for teachers' good. Okay then, take care. Bye bye.